हम ज़बूर 119 की 97 आयत को देखेंगे। ज़बूर 119 97 आयत, Psalm 119 verse 97, इसमें यूं लिखे है, आह मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। प्रेजेंट टेंस है, रखता हूं। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। संडे के संडे ध्यान रहता है, दिन भर उसी का, शरीयत का, कलाम का ध्यान रहता है। How I love your teachings. I think about them all day. The King James says, it is my meditation all the day. दिन, सारा दिन ध्यान, मेडिटेट करता हूं मैं तेरे कलाम पर। Now, we are learning to treasure God's word into our lives, into our hearts. How we can do that? पिछले दिनों में हमने देखा कि we can treasure God's word by, remember, by reading God's word, and not only by reading but receiving it. Not only by reading it but by receiving it. And today we will learn the third thing, how we can restore, how we can store God's word into our hearts. Number 3, we not only receive God's word and not only by reading God's word but by researching God's word. तहकीक करने से, खोज लगाने से हम खुदा के कलाम को लर्न करते, तहकीक करने से, रिसर्च करने से. This calls for writing down your notes, writing down your thoughts. जब आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, थॉट्स अपने जो हैं वो नोट करें. It also calls for asking the right questions. Why you are here? Oh, this chapter, this verse, why you are here? How can I relate this verse for myself? ये मुझे क्या सिखाती है आयत? ये passage मुझे क्या सिखाता है? Asking different right questions. What? Who? When? Where? Why? How? These questions we need to ask when we study the Word of God. And when we do this sort of Bible study or our work, what will happen? We will give us not only to information to our hearts, but it will fill us with insight, understanding the spiritual things. रूहानी चीजों को हमें समझने में मदद मिलेगी. So रिसर्च करना बहुत जरूरी है. Are you willing to research God's word? Commentaries देखेंगे आप, बाइबल स्टडीज जो हैं उनको आप परसू करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, देखेंगे आप, रिसर्च इट. और नंबर 4 है by
remembering it. Remembering, memorizing. You may think your memory is poor, like mine. I'm getting old now, so my memory is little poor now. I don't remember things. Lucky always मुझे याद कराता है चीजों को, right? मेरी memory कमजोर हो रही है. But let me say this: you have already memorized millions of ideas and facts of life. The truth is, we remember what's truly important to us. जो अहम चीज होती है हमारे लिए वो हमें हमेशा याद रहती है. And we believe it or not, there are enormous benefits to memorize scripture. इसको याद करने के बेशुमार लातादाद फवायद हैं. किस किस्म के फायदे हैं? Let me tell you. It will help you resist the devil. Listen. ये अगर आपको आयत याद होगी, हवाला याद होगा, तो आपको शैतान की आजमाइश, जब वो आजमाएगा आपको, तो आप उस आजमाइश से महफूज रह सकते हैं. वो फट से आपको याद आएगा कि ये लिखा हुआ है, ये काम मैंने नहीं करना. It will resist. It will help you resist the devil. Not only that, it will help you resist the temptation. It will help you to make better decision. अगर आपने याद किया होगा तो आप गलत रास्ते पर जाने की बजाय सीधे रास्ते पर जाएंगे. It will help you to reduce your stress. जब मुश्किल में, खौफ में होता है बंदा, परेशान होता है, तो अगर आपको हवाला कोई आता हो, आयत याद होता है, तो वो आपको दिलासा देती है, हिम्मत आपकी बंधाती है. पर आपको अगर याद ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर डरना ही है हर वेले. It reduce your stress. It will help you build your confidence. आपका इत्मीनान जो है वो बढ़ाएगा कलाम अगर आपके अंदर है. It will strengthen your faith, your thinking, and it will enable you to share your faith with other people. Your memory is like a muscle. जितना आप मसल्स को करते हैं यूज, उतने वो स्ट्रांग होते हैं. कितने तेरे मसल, राइट? जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको ये स्ट्रांग आप बन जाएंगे. So start writing. When you search, when you read, write down your notes, write down a verse every day you like to read. Every day, one verse a day, you will make the difference. Write it down. It will help you. It will help you. And when you write it down, अपनी जेब में डालें, carry it with you. और जब मौका मिले उसको रीड करें, बार बार उसको दोहराएं. स्मॉल एक नोट में डाल के उसके ऊपर लिख लें, उसको पढ़ते जाएं, आपको याद हो जाएगा. You will memorize. जब आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं कहीं पर, वेट कर रहे हैं, और before going to bed, you can read and recite it. It will memorize. The key to memorizing scripture is to review. Review and review and review and review and review. नजरसानी करें उसके ऊपर, याद हो जाएंगी चीज. और पांचवी बात, by reflecting on it. रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर सोचें. No other habit will do more to mature
us spiritually than reflecting daily on God's word. As we make this a habit, we literally transform into His likeness. खुदा की सूरत पर हम ढलते हैं, मसीह की शक्ल पर हम ढलते हैं जब उसके कलाम को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, उस पर सोचते हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इमाल की किताब के अंदर भी हम देखते हैं, आफ्टर रिमूविंग Saul, he made David their king, but God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Acts 13:22. Now, how David learned and how David earned this special place, distinct place in God's heart. How? Because he learned and he earned that special place in God's heart because David loved to reflect on God's word daily. वो भेड़ों के पीछे क्या कर रहा था? खुदा के कलाम के ऊपर ही गौर व खौस करता रहता था, गीत गाता रहता था, हमदो सना, praise and worship करता रहता था. He was reflecting on God's word day and night. So friends, think about that. How I love your teaching. That's what he is saying. 119 बुर के अंदर जो हमने पढ़ी है 97 के अंदर, that's what he is saying. How I love your teaching. God, see, day and night I'm reflecting on your God's word, memorizing your word. He says, I think about them. I meditate. Think about the मतलब होता meditate करना. I meditate on it all day long. So friends, the key to successful Christian life, मसीही जिंदगी, कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने की जो चाबी है, the key to successful Christian life, Christian living is yours when you treasure God's word inside your heart. So then, wherever you will go, wherever you will be, no matter what circumstances you are in, good or bad, you are successful because God's love, God's word lives inside you. And He will protect you, He will help you, He will give you grace and faith to stand tall in difficult times. And all God's people said, Amen. Amen. Let us pray. Almighty God, heavens is yours and earth belongs to you. We seek your face this afternoon and we feel ashamed for not being consistent in our walk with you, O God. Our lives are so occupied with the stuff of this world, the temporary stuff which might have a temporary benefit but not eternal benefits. Help us today as we have learned to treasure your word. Help us to reflect on it. Help us to meditate on it all day long, as King David did. Help us to think
upon your word every day and night, as long as we live this side of the eternity. Give us grace, O God, and wisdom to do this. Make us habitual to research your word, habitual to recite and memorize your word, so we will be able to serve you and to know you better day by day. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people said, Amen. Amen.